Hello aspirants, welcome to the channel, your UPSC Notes. How are you all? Let me know in the comment section कि आप सब लोग कैसे हैं और नहीं ठीक हैं तो ज़रूर कमेंट करिए. आप सबको पता है that we will help you out. We will help you out, each other. So, as you all know, on this channel, I share with you all my own notes on different subjects so that you get an idea how you can make short and crisp notes which is meaningful which can be helpful for your both prelims and exams. अगर आप मेरे notes से guidance लेके अपने notes बनाते हैं तो ये आपको last moment पे revise and memorize करना बहुत ही easy हो जाएगा. And also, if you want notes on any specific topic that I haven't shared yet, और या किसी टॉपिक पर कैसे नोट बनाएं समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल हेल्प यू आउट ऑन दैट एज वेल. So before starting, I would request you all to please like, share and subscribe the channel so that we grow together and it helps, it reaches out more aspirants like you who are lost in the chaos, don't know what to study, don't know how to write answer, don't know how deep to go into the studies and don't know how to make notes. इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है दिस चैनल. आपको आंसर राइटिंग के बारे में भी पता चलेगा, नोट्स कैसे बनाएं वो भी पता चलेगा, आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करें वो भी पता चलेगा और कितना पढ़ना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, इससे भी आपको मेरे चैनल से पता चलेगा. बिकॉज वो कोई भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ें आई हैवंट कवर्ड इन माई नोट्स. आई हैव नेवर मेड नोट्स ऑन दोज थिंग्स विच इज नॉट अ यूपीएससी कंसर्न. ऑलराइट, so let's get started. So today's topic that I've got, I'm sharing my note with you all, is a formation of stars. It is a geography topic. So formation of stars, as you can see, I have not written much. It's just a diagram, flow diagram में और छोटे से उसके micro details, micro explanation मैंने लिख लिया है. If you make your notes like this, just picture, even if you just आप पिक्चर्स बनाएं और समझ लें वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा. बट लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करते समय कभी कभी भूल जाता है. ओके, व्हाट इज दिस, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन लिटिल टाइनी एक्सप्लेनेशंस so that you don't forget at all. So let's see what I have included in my notes and what is the logic. So formation of stars. First thing you need to know, the stars, they don't have solid surface. Stars don't have solid surface. You must have studied in your geography books, even in class 11th NCERT. It is made up of only gases. So stars are only gases. They don't have solid surface. Now, how do they form? The stars, how do they form? So here notes में मैंने क्या लिखा, बस इतने से मैं I have एक कहानी की तरह नहीं लिखा है मैंने, इनके स्टेजेस, वन स्टेप we have 7 to 8 steps of formation of stars that I have made in my notes. So the first step is what happens, there is a nebula like structure, gases where, see, what is this? The core. This is the core. You can make diagram like this. Core of gas cloud, gas and dust develops around the core. So जो dense gases होती हैं, जो dust होता है वो core में हो जाता है and then उसके surrounding क्या होता है, localized hydrogen gas lumps. So जो थोड़ी सी scattered gases होती है which are less dense, they move to the upper peripheral. So इस तरह से फिर वो नेबुला एक फॉर्म हो जाता है. बट और इसका टेम्परेचर क्या रहता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, -173 डिग्री, -173 डिग्री. तो इस तरह से अब जब गैसेस होती हैं वो एक दे स्टार्ट कमिंग टुगेदर and then according to density they arrange themselves into the core and outer core, then it becomes nebula. That is the first stage of the formation of stars. Then what happened in the next stage, the temperature soars to the 10 to the power 7 degrees Celsius, from minus to the positive
10 to the power 7 डिग्री सेल्सियस, दैट मच हाई इट गोज, वहाँ पे क्या होता है, द डेंसिटी इनसाइड नेबुला इंक्रीजेस. तो जो नेबुला में डेंसिटी होती है वो इंक्रीज करती रहती है. एंड देन सेम लोकलाइज्ड हाइड्रोजन गैसेस लम्प्स, गैसेस तो वही रहेंगी, वो चेंज थोड़ी हो जाएंगी. बट वन मोर थिंग स्टार्ट्स हैपनिंग हियर. व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक प्लेस. यू नो that we the scientists on the earth trying to achieve the human race, that takes place on its own in the nature. So density increase हो जाती है nebula में, that is so obvious, and then nuclear fusion start हो जाता है. These two things, अगर आप notes बना के इतना लिखते जाते हैं, अगर process आता है ना, this is sufficient. This itself will fetch you very good marks. कोई कहानी नहीं पढ़ने वाला. The examiners will automatically know what you are trying to say, how much you know. So it becomes a protostar. Then what happens, then goes to the third stage. What happened, this is still the part of second stage. See, that's how it happens in the second stage. Then we will go to the third stage. So second stage में जब डेंसिटी इनसाइड नेबुला इंक्रीज होने लगती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है, and then you can see the core is getting to the center, it is getting more concise, and then gas cloud also condensing means they are pulled into the core, pulled towards the core, and then planetesimals formed around gas clouds. So core is condensing. When something condensed, you know, the density of it gets increased. तो core condensing, and then उसकी चारों तरफ planetesimals formed around gas clouds. जो gas clouds है, gas clouds जो है वो भी condense हो रहे हैं. See, everything in the process will get condensed. तभी तो वो solidify होगा. Solid not in the sense stars are not solid. They don't have solid surface itself. But जो ball-like structure हम देखते हैं, it is not like cloud कि यहाँ से वहाँ scattered है, unshaped है. The stars, they seem to us like एक सर्कल, छोटा सा गोला. तो they are still a gas, but the condensation से ही वो उनकी एक अपनी gravity जो होती है ना, gravitation pull जो maintain होती है, that happens. So this the core condensed, and then gas clouds condensing and planetesimals form हो जाते हैं. Then what happens, the planetesimals join together due to collision and gravitational force to form larger bodies called planets. जो planetesimals होते हैं, जो dust हुआ करता था, right, they condense and then planetesimals, तो जो छोटे छोटे planetesimals होते हैं, but उनकी अपनी gravitational एक force होती है, though on a smaller scale, क्योंकि बहुत सारे planetesimals, तो सबकी gravitational force on their area में work करती है. So they क्या होता है, जब move तो करते रहते हैं, they move around the core and then they collide with each other. When they collide with each other, then they come together, they fuse and they become one. Also, why do they collide? They also pull, due to gravitational force, they pull each other and then they become one, and that's how they form the planet. So what happened? Let's go to the third stage. Now, after forming the planets by the collision of planetesimals, then we go to the third stage. There is a star is formed, and which generate heat and light. The star is formed and generating heat and light. Then what happened to the next stage? A mature star. The star which was formed, it's still in its nascent stage. It is not matured enough, but over the period of time it gets mature. जब mature क्या हो जाता है, then what happens? The outer surface expanding. Outer surface of the star still keeps expanding, and then core will tend to get collapsed, tend to get dense and collapse. तो core क्या होगा? जो outer surface तो है, और outer surface will keep expanding and core will get cold, dense and core collapse हो जाएगा. This is the fourth stage. And what will happen in the fifth stage then? Fifth stage में
it explodes and engulfs the planetary system around it. Red giant star. So our sun, what is our sun? Our sun is not a red giant star. It hasn't reached here. It is generating heat and light, right? Alright. Our sun is generating heat and light. And it is also expanding its outer surface. But it has not reached to the fifth state. So we are not. So आप ऐसे समझ सकते हैं. Where does आप थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाइए और स्टडी करिए, बुक्स को रीड करिए, 1 times 2 times to get a proper understanding. So जो ये expand होता रहेगा, where does our sun fit? आप भी एक फाइंड करिए. तो आउटर एक्सपैंड होता रहेगा और जब ये रेड जाइंट स्टार बन जाएगा तो क्या होगा? It will explode. There will be explosion because यहाँ से expand हो रहा है, expand होके कहीं तो जाएगा. Then it will expand and then planetary system, जब star एक explode होता है, as we all know, it is many times, the sun is many times bigger than the earth, तो obviously जब वो blast करेगा, वो explode होगा, explode in the sense expand होगा, तो it will engulf all the planets. So it engulfs the planetary system around it, which is the stage 5. And when it engulfs the planetary system, what happened? Then there is a 6th stage. So there is something called Chandrasekhar limit. Chandrasekhar limit का क्या होगा? जब जो स्टार एक्सप्लोड हुआ है, which is engulfing the planetary system, अगर उसका साइज कितना है? अगर उसका साइज इज ग्रेटर देन 1.44 टाइम्स ऑफ सन, अगर वो सन के 1.44 गुना ज्यादा है, फिर क्या हो जाएगा? उस केस में क्या हो जाएगा? रेड जाइंट विल एक्सप्लोड इनटू सुपरनोवा एक्सप्लोजन. फिर जो ये स्टार एक्सप्लोज हुआ था और इसने प्लैनेटरी सिस्टम को ऑलरेडी एनगल्फ कर लिया हुआ है, फिर वो क्या हो जाएगा? सुपरनोवा एक्सप्लोजन में टर्न कर जाएगा. ऑलराइट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन में चंद्रशेखर लिमिट इज 1.44 टाइम्स ऑफ द सन. फिर वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में हो जाएगा. देन व्हाट विल हैपन? लेट्स सी व्हाट हैपन इफ इट इज लेसर देन 1.44. If it is smaller than the Chandrasekhar limit, in the red giant star which has already engulfed the planetary system, it is smaller than 1.44 times of the sun, then the red giant will collapse into planetary nebula. फिर वो planetary nebula में ही collapse हो जाएगा. It will not lead to supernova explosion. All right. देन क्या होगा? फिर जब वो प्लैनेटरी सिस्टम में ही कोलैप्स हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन? द हीलियम, जो हीलियम गैसेस रहेंगी, इट विल टर्न टू कार्बन. हीलियम विल टर्न टू कार्बन एंड देन व्हाइट ड्वार्फ विल फॉर्म एंड देन ब्लैक ड्वार्फ. ऑलराइट, helium will turn to carbon and then white dwarf planets like Pluto we have been categorized now as a white dwarf planet. So white dwarf and then वहां से black dwarf planet हो जाएगा. But if it is greater than, if the red giant star is greater than the Chandrasekhar limit, then what will happen? We have already discussed, supernova explosion हो जाएगा. Supernova explosion के बाद ये क्या होता है? यहाँ पे 2 cases होते हैं. Exploded star is greater than 3 times of the sun. All right. Exploded star is greater than, एक तो हमने पहले देखा कि 1.44 टाइम्स ऑफ द सन तो सुपरनोवा हो गया, लेकिन अगर 3 टाइम्स ऑफ द सन है, उससे बड़ा है, तो फिर क्या होगा? Might turn to black hole. अगर वो सन के 3 गुना ज्यादा है तो it might turn into a black hole. All right. But if size is 1.44 to 3 times of the sun after explosion, but red giant जो explode किया, planetary system को engulf कर लिया and supernova already वो हो चुका है, but उसका size sun के 3 गुना से कम है. alright, 3 गुना से कम है. then what will happen? Neutron star is born. Then a neutron star will be born. It will turn into neutron star, which will then it will turn to, after it becomes neutron star, it will turn to pulsar. Pulsar means rotates many times within a second. It will like pulse. It will be
इट विल रोटेट, एक ही सेकेंड में वो कई बार रोटेट करेगा, लाइक पल्स, यू नो, इट विल बी वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, सो वो पल्सार हो जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, नेक्स्ट स्टेज में वो इट विल बिकम मैग्नेटार, इट विल बिकम मैग्नेटार। मैग्नेटार मीन्स हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड स्पीड इज स्लाइटली लोअर। पहले क्या हुआ था, न्यूट्रॉन स्टार बॉर्न हुआ, उसके बाद वो पल्सार हो गया, which within a second it was rotating many times, but after over a period of time, you know, long time, हम we can't even imagine, it will turn into magnetar, जिसके अराउंड उसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और स्पीड भी उसका थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। ऑलराइट, its speed will also slow down. So that is how, that's all the formation of star. Formation of star. This is how I have made my notes for the formation of star. Stage wise आप एक फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं, यू नो, फ्लो डायग्राम वैसे भी बना सकते हैं। और अगर आपको लगे कुछ और चीजें which you think you will forget, you can just write in 1 word or 2 words, and then your formation of star is complete, easy to revise, no confusion at all. And that's how you can make your note. So that's all for this video. I would request you all to please subscribe now, like now, and share with your friends who needs such kind of guidance. And see you in the next video. Thank you. Love you all.